Once again, good morning to all of you. In previous lecture, we have completed meaning and importance of article of association in SP. Second, legal provisions pertaining or related with article of association. Now, new topic is contents of article of association. Chapter 5. In short, I am writing AOA means Article of Association. Now, new topic is contents of Article of Association. Means what type of points, what matters should be included in article of association, that is called contents of article of association. So any 6 points of your own choice you can do. Here I am trying to take easy points. First one is, generally the articles of association contains the following particulars. If any primary agreement have been entered into or not. If so, the same has been expected or not. Means, if company has entered into any contract or any agreement, then they have to mention those contract or whether that contract is accepted by the company, means by both the parties or not. Both the parties means, for example, if company is enter into an agreement with other company, means both the companies are going to combine together and doing some work. So they are making a kind of partnership. So whether they have entered into an agreement or not, if they have entered into an agreement, then whether they had accepted that agreement or not, such type of things they are required to include in article of association. First point. But first point, easy. Try to take easy points. Second point is number of shares and face price thereof. This is easy point. The number of shares and their face price means face value. So whatever number of shares company has issued, that number of shares is required to mention in article of association, and their face value means the face value of share is also required to mention in the article of association. Second one is rules regarding share installment, now what is share installment? First of all, try to understand share installment. Suppose the face value of share is 10 rupees and company is issuing 30,000 shares. Now most of the times company is not demanding this 10 rupees altogether. They are demanding this 10 rupees means face value in different installments. For example, first installment is of 2 rupees, second installment is of 3 rupees, third installment maybe of 5 rupees, 5, 3, 2 means suppose I had purchased 500 shares. It means total I have to pay 500 into 10, 5,000, but not all together. I have to pay this 5,000 rupees according to company in these 3 installments. Means first time I have to pay 500 into 2 means 1,000 rupees. Second time 500 into 3 1,500, and last time 500 into 5 means 2,500. Here total I have to pay 5,000 but in 3 installments. So when company is issuing shares, so they need to mention the rules regarding share allotment, means total how many allotments are there, how many installments are there.
that number of installments. Here in our example, total 1 2 3 installments are there, and each price of each installment should also be mentioned in article of association, that in, for example, in next month or first time we are going to issue 30,000 share, the face value of share is 10 rupees face value, they need to mention. Then if they are demanding this 10 rupees, this face value, in different installments, then they need to mention the number of installments and value of each installment they need to mention. And second point, before demanding any installment, various formalities which are required to be followed by the company. For example, before demanding installment, company has to conduct a meeting. In that meeting, they need to pass a resolution. Resolution means final decision, that yes, we are going to demand 2 rupees in the first installment, then 3 rupees. Means before every installment, they have to conduct a resolution. In that resolution means final decision. And after passing resolution, they have to send notice. Notice means a kind of information to the shareholder in order to make them remember that you have to pay this and this amount, this and this installment by this date. इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मीटिंग में बनाए जाते हैं, फाइनल डिसीजन लिया जाता है. फाइनल डिसीजन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन पास हो जाए, उसके बाद सभी इंस्टॉलमेंट्स के लिए टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स के पास नोटिस जाती है. नोटिस का मतलब होता है उनको इन्फॉर्म करना, उनको याद दिलाना कि आपको ये हफ्ता जो है, ये इंस्टॉलमेंट जो है, इस डेट तक आपको पेमेंट करनी है. That is called, means all the rules they have to mention in article of association regarding each installment. Third one is rules relating. Third one is simple rules regarding transfer of shares, now company has to mention all the rules regarding transfer of shares in article of association. Now first of all, what is transfer of shares? What is transfer of shares and what are the rules regarding transfer of shares? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का मतलब होता है जब एक शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अपने शेयर्स, सारे के सारे शेयर या थोड़े शेयर किसी और के नाम कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. जब हम ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स अपनी इच्छा से. मीन्स इन इंग्लिश ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मीन्स व्हेन शेयर होल्डर transfer whole or a part of his share in favor of other person, then it is called voluntarily. That is also voluntarily, अपनी इच्छा से, then it is called transfer of share. For example, I have 500 shares. Anytime in future I can transfer whole, means all 500 shares or a part of this in favor of some other person. That is called transfer of share. लेकिन ट्रांसफ़र करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव टू फिल ट्रांसफ़र फॉर्म. एक फॉर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र फॉर्म और ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट. वी हैव टू टेक द ट्रांसफ़र फॉर्म फ्रॉम द कंपनी, देन फिल द ट्रांसफ़र फॉर्म. वो ट्रांसफ़र फॉर्म में जितनी डिटेल्स होती है वो भरनी होती है. आफ्टर दैट वी हैव टू सबमिट ट्रांसफ़र फॉर्म अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट. दीज आर द रूल्स. इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ फॉर नॉलेज. Then we have to submit the transfer form with different documents, with share certificate and other documents. After submitting these documents, company verify all the documents. If they are satisfied with the documents, then they are sending notice to both the parties. Both the parties means transferor and transferee. Transferor जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफरी जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो नोटिस भेजते दोनों के पास. नोटिस इसलिए भेजा जाता है सो दैट इफ़ दे एनी पर्सन आइदर सेलर और बायर, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, हैव एनी ऑब्जेक्शन, मतलब बाद में अगर डिसीजन चेंज करना हो कि नहीं बेचने का है या नहीं खरीदने का है, तो ये दोनों पार्टीज ऑब्जेक्शन ले सकते हैं. बट इफ़ आफ्टर सेंडिंग नोटिस टू देम इफ़ दे आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई, देन कंपनी ऐसा मान लेती है कि दोनों के दोनों पार्टी, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला और जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे शेयर, बोथ आर एग्री टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब ये बेचने को तैयार है, ये खरीदने को तैयार है. Then after sending notice, if no reply is coming from both the parties, then company is considering that both the parties, means seller and buyer, are ready to accept the transaction. Once they are ready to accept the transaction, then their name, means name of the transferee, is entered in
ट्रांसफ़र रजिस्टर में उसको एंटर करते हैं। एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, उसमें उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसके नाम पर शेयर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आफ्टर दैट कंपनी हैज़ टू कंडक्ट मीटिंग, इन दैट मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पासिंग रेजोल्यूशन पास करने का मतलब है फाइनली दे हैव टेकन डिसीजन कि यस ये शेयर जो है इसके नाम पे कर दिया जाए। आफ्टर दैट द नेम ऑफ दिस पर्सन, नाउ ही बिकम्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब ये क्या बन गए कंपनी के शेयर होल्डर। देन हिज नेम विल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, अदर रजिस्टर इज रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर मेंबर उस रजिस्टर को बोलते हैं जिसमें सभी शेयर होल्डर्स के नाम एड्रेस रिकॉर्ड होते हैं, उनके नाम पर कितने शेयर है। नाउ ही बिकम्स, दिस पर्सन बायर बिकम्स शेयर होल्डर, सो हिज नेम विल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जैसे ही उसका नाम इधर रिकॉर्ड होगा, नाउ ही इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियली ही इज कंसिडर्ड एज शेयर होल्डर। नाउ कंपनी विल सेंड हिम शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट is an evidence, written evidence that this person holds this and this number of shares, तो उसको एक शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता है। दिस इज द फॉर्मेलिटीज। सो ऑल फॉर्मेलिटीज, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर इज टू बी मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट, rules about, here I am trying to take easy points which you can learn easily. Rules about transmission and forfeiture of share. And forfeiture of shares. Fourth point. Now first of all, fourth point is rules about transmission and forfeiture of share. Transmission and forfeiture both have different meaning. The first of all, try to understand forfeiture of share because here example is given. That's why first of all we are taking what is forfeiture. Suppose company has issued Suppose company has issued 30,000 share and the face value of each share is 10 rupees and company is demanding this 10 rupees in 3 installments. The name of the first installment is application money, that is of 5 rupees. Here you are not required to understand application money, allotment money. Suppose this is first installment. Second installment is known as allotment money. This is second installment. This is of 3 rupees. And suppose this is third installment, that is called call money, 2 rupees. So here company is demanding 10 rupees in 3 different installments, 5 rupees, 3 rupees, 2 rupees. Now assume that I have purchased 500 shares out of 30,000. It means again I have to pay total 5,000 rupees. First time I need to pay 1,000 rupees. Second time 1,500 and third time 2,500. Means total I have to pay 5,000 rupees in 3 different installments. Now first installment I had paid, but so far as second installment is concerned, suppose that time I am passing through financial problem, means I am not in a position to pay second installment 1,500. कंपनी हैज़ सेंड मी नोटिस, कंपनी नोटिस भेजती है कि आप ये पेमेंट इतने डेट तक करनी है आपको, बट रीज़न इज़ आई एम पासिंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू पे दिस सेकेंड इंस्टॉलमेंट इवन आफ्टर गेटिंग नोटिस. Then company may, not necessary, company may give me another chance that no problem, pay this 1,500 along with third installment. मतलब ये जो 1,500 रुपये का हफ्ता है वो आप तीसरे हफ्ते में दे देना, मतलब टोटल 4,000 रुपया आप थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देना. बट स्टिल आई एम नॉट पेइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो 2,500 प्लस 1,500 आई हैड नॉट पेड. Then what? Then company will send me first letter that please send 4,000 rupees by this date. If I am not sending this amount, then again company will send another reminder letter, that is called reminder letter, and that is the final reminder letter कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करते इस डेट तक तो your share will be taken back. आपके जो शेयर आपको हमने दिए वो हम आपसे वापस ले लेंगे. दैट इज कॉल्ड forfeiture ऑफ शेयर. और इन केस ऑफ forfeiture ऑफ शेयर, अगर एक बार शेयर forfeit हो जाए
देन वॉट एवर अमाउंट आई हैड पेड, मैंने कितना पेमेंट किया था अभी तक 1000 रुपीज, दैट मनी विल नॉट बी रिटर्न बाय द कंपनी, दे विल टेक माई शेयर बैक, एंड वॉट एवर अमाउंट आई हैड पेड ऑन शेयर दैट अमाउंट विल नॉट बी रिटर्न बाय द कंपनी, वो कंपनी जितना भी पैसा मैंने भरा है वो कंपनी वापस नहीं करेगी। तो शेयर वापस लेना, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम होगा, उसमें से मेरा नाम काट देंगे, वो कैंसिल कर देंगे, मीन्स नाउ आई एम नॉट रिमेन अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ कंपनी का, दैट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर। लेकिन शेयर फोरफिट करने से पहले देर आर वेरियस फॉर्मेलिटीज विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल फोरफीचर कैसे होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जिन जिन लोगों ने हफ्ता नहीं भरा है उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर, दैट इज कॉल्ड एरियर। एरियर मीन्स outstanding, outstanding means the amount which is not paid by the shareholder, that is called outstanding amount, arrear amount. So they are preparing list of calls in arrear, means who is preparing? Company secretary. Company secretary is preparing list of all those shareholders who has not paid the installment. After preparing list of calls in arrear, they are presenting that list before board of directors in the meeting. Then board of directors are giving permission to send notice, to send letter to shareholders. That notice means reminder letter. Reminder letter we can say, or warning letter. You have to make payment by this date. If we are not making payment, then company secretary sending another reminder letter. That is the final reminder letter. उसमें warning होती है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो your share will be forfeited. Forfeited means taken back. After that, company secretary, it is compulsory for company to publish in the newspaper. After sending reminder letter, then company will forfeit the share by passing resolution. पहले resolution पास करना पड़ता है कि yes, फाइनल करना पड़ता है कि हाँ इसके शेयर फॉरफिट कर लो। एक बार रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, देन दे नीड टू सेंड नोटिस टू अस, वो हमें नोटिस भेजेंगे रिटर्न फॉर्म में कि योर शेयर विल बी फोरफिटेड। फोरफिटेड मीन्स योर शेयर विल बी टेकन बैक, नाउ यू आर नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। आफ्टर सेंडिंग नोटिस टू द शेयर होल्डर, देन दे नीड टू पब्लिश अबाउट द फोरफिचर ऑफ शेयर इन द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करना पड़ता है, लोकल न्यूज़पेपर में, कि इस नंबर का जो शेयर है वो फोरफिट हो गए। क्यों पब्लिश करना पड़ता है? सो दैट जो शेयर होल्डर जिनके शेयर फॉरफिट हुए वो उसको फ्रॉड के फॉर्म में किसी दूसरे को ना बेचे। और आफ्टर पब्लिशिंग इन लोकल न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू डिलीट द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सो दीज आर द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग फोरफिचर ऑफ शेयर। सो ऑल फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग फोरफिचर ऑफ शेयर मस्ट बी मेंशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ सेकंड वन इज ट्रांसमिशन। व्हाट इज ट्रांसमिशन? Two concepts are there. One is transfer of share, other is transmission of share. In case of transfer of share, shareholder is transferring his share in favor of other person voluntarily. ट्रांसफर ऑफ शेयर में शेयर होल्डर जो है वो अपनी इच्छा से शेयर किसी के नाम करते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन suppose shareholder dies or become insolvent or become insane. dies means वो मालूम आपको, बाई चांस शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाए। इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट हो जाए, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे अमाउंट। और इनसेन मीन्स मैड हो जाए, पागल हो जाए, मीन्स मेंटली डिसेबल हो जाए। in all these three circumstances, the shares of shareholder automatically transferred to his legal representative. Legal representative means जब हम शेयर खरीदते हैं, at the time of purchasing share, we have to give the name of nominee in the application. हमें नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। नॉमिनी may be wife, son, daughter or any close relative. So at the time of, means in the event of death of shareholder, or in the event of insolvency of shareholder, or in the event of lunacy, insanity of shareholder, एक इनमें से कोई भी एक परिस्थिति आए तो his shares are automatically transferred to nominee in the name of nominee. शेयर होल्डर नहीं करते, अपने आप वो शेयर उसके नॉमिनी के नाम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर, बट हेयर शेयर होल्डर इज नॉट ट्रांसफरिंग,
ये सिचुएशन आ गई है, इसलिए शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए टू द नेम ऑफ नॉमिनी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. नाउ व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन? तो वो रूल्स सारे रूल्स लिखे होते हैं कि नॉमिनी के नाम कैसे होंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं हो जाते, कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो करने होते हैं. लीगल दैट नॉमिनी इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. उस नॉमिनी को हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर हैज़ डाइड एंड शेयर्स आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू हिज वाइफ. उसके वाइफ के नाम हो गए. तो अब फॉर्मेलिटीज क्या पूरी करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइफ हैज़ टू सबमिट द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर होल्डर टू द कंपनी. उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ सर्टिफिकेट जो होती है वो उसको जमा करानी पड़ेगी. सेकेंड, एनी डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स दैट शी इज़ द वाइफ ऑफ डिजीज्ड शेयर होल्डर. डिजीज मीन्स जो जिस शेयर होल्डर की मृत्यु हुई है उसकी वो वाइफ है. ऐसे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटिंग ID. सो एनी डॉक्यूमेंट शी हैज़ टू सबमिट टू द कंपनी विच प्रूव्स द रिलेशन with the shareholder. After verification of such relation, then if company is okay, satisfied with the document, then आगे के फॉर्मेलिटीज वही है कि वो नोटिस पहले रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर उसके वाइफ को या उसके नॉमिनी को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजते हैं कि नाउ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन योर नेम, आपके नाम पे होने जा रहे हैं शेयर्स. उसके बाद हर नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाएगा और आफ्टर एंटरिंग हर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू हर. These are the rules regarding transmission of share. So all the rules regarding transmission of share must be mentioned in article of association. Fifth point, rules relating to general meeting. Now company has to conduct meetings time to time. कंपनी को समय समय पर मीटिंग करनी पड़ती है in order to discuss various matters, in order to make policies for the company or in order to take major decisions. जनरल मीटिंग बोलते हैं उसको. जो मीटिंग होती है उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 12th में पढ़ेंगे, दैट इज कोरम. QORUM. कोरम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में 5,000 या 6,000 शेयर होल्डर है, मीटिंग होती है, तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल, मतलब इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल शेयर होल्डर और वी ऑल नो दैट शेयर होल्डर हैव राइट टू अटेंड द मीटिंग अटेंड करना है. बट मान लेते हैं कि 5,000 शेयर होल्डर में से मीटिंग में सिर्फ 10 ही मेंबर आए हैं, 10 ही शेयर होल्डर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, तो वेदर दैट मीटिंग इज़ वैलिड और नॉट, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड कोरम. कोरम मीन्स क्या होता है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द मीटिंग. एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड कर दिया गया है कि अगर इतने मेंबर आते हैं मीटिंग में, देन मीटिंग कैन बी कंडक्टेड, मीन्स दैट मीटिंग विल बी कंसिडर्ड वैलिड. फॉर एग्जाम्पल, एक रूल बता देता हूँ आपको बस अभी शॉर्टकट में. सपोज रूल क्या है कि आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में ये रूल है कि अगर किसी कंपनी के पास 1000 शेयर होल्डर है, मतलब शेयर होल्डर की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर इज 1000. इफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज 1000 अप टू 1000, देन अगर उस 1000 शेयर होल्डर में से 5 मेंबर मीटिंग में आते हैं, देन नॉट बिलो 5, एटलीस्ट 5, मिनिमम 5, दिस 5 इज कंसिडर्ड एज कोरम. उसको बोलते हैं कोरम. कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, सो दैट मीटिंग विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड मीटिंग. उसको वैलिड मीटिंग माना जाएगा, लीगल मीटिंग माना जाएगा. एंड वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय दिस 5 मेंबर्स, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 1000 के 1000 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने आने चाहिए मीटिंग में, ताकि मीटिंग चालू रहे, कंटिन्यू हो और उसमें जो डिसीजन लिया जाए विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल. सो अगर शेयर होल्डर की संख्या 1000 तक है, 200 है, 300 है, बट मैक्सिमम अप टू 1000, देन एटलीस्ट 5 मेंबर्स शुड बी कंसिडर्ड एज कोरम. अगर 1000 से ऊपर होती है संख्या शेयर होल्डर की और 5000 तक होती है, उस केस में 15 मेंबर माने जाते हैं कोरम.
मतलब 15 मेंबर का आना जरूरी है। 15 से कम आएंगे, मतलब इस केस में 5 से कम आएंगे, देन दे कैन नॉट कंडक्ट मीटिंग। अगर इस केस में 15 है, 15 से कम आते हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट मीटिंग। सो ऑल द रूल्स, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कोरम का, और भी रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एजेंडा, माइन्यूट्स बुक, वो सब के रूल होते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग करना, जो मीटिंग में चल रहा है उसको रिकॉर्ड करना, तो किस रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। देन रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन भी पास करने के 2 तरीके होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अदर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो उसमें 51% वोट उस मैटर के फेवर में आना चाहिए, जो मैटर की डिस्कशन चल रहा हो, वॉट एवर मैटर इज गोइंग ऑन डिस्कशन इन द मीटिंग। अगर उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास करना है, इसका मतलब एटलीस्ट 51% वोट मस्ट कम इन दैट फेवर। अगर उसके फेवर में 51% वोट आते हैं तो जो भी उस मैटर है वो उस पर वो मान लिया जाएगा। अगर रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करने का है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें से 75% वोट इज नेसेसरी। So there are different rules and regulation related with general meeting. So all the rules and regulation regarding quorum, एक और वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का भी रूल्स है रिलेटेड विद मीटिंग। प्रॉक्सी कौन होते हैं? सपोज शेयर होल्डर्स हैज टू अटेंड द मीटिंग बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे आर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। किसी कारण से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट शेयर होल्डर एनी अदर पर्सन कैन अटेंड द मीटिंग। कोई भी इंसान जिसको वो अलाउ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बट ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग conducted by the company, so I can send any person means whether that person is related with the company or not, but I can send any person on behalf of me to attend the meeting. That person is called a proxy. उसके भी नियम है। प्रॉक्सी कौन होगा? तो एनी पर्सन फर्स्ट, माइनर कैन नॉट बी प्रॉक्सी। वो रूल सारे मेंशन होते हैं कि एनी पर्सन हु इज माइनर, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, that type of person cannot be appointed as proxy. Another rule regarding proxy, अगर हमें किसी को proxy बनाना है तो we have to inform company at least 48 hours before the meeting. मीटिंग जब भी हो उससे 48 घंटे पहले हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपनी को कि वी आर सेंडिंग दिस एंड दिस पर्सन एज अ प्रॉक्सी. So these are the different rules which are required to mention in article of association. And last point I am taking, last AC point, rights and duties of board of directors. Simple point. Rights and duties of board of directors. So all the rights and duties of board of directors must be mentioned in article of association. So these are 6 points. The number of shares and their face value. So any 6 points you can take of your own choice. Here I have taken 6 easy points. The number of shares and their face value, then rules regarding installment about shares, then rules regarding transfer of shares, then rules about transmission and forfeiture of shares, rules related with general meeting, and rights and duties of board of directors must be mentioned in article of association. And last topic, that is on page number 110. विजय सर ले लेते ना फोटो, एक मिनट कट. Now difference between memorandum of association and article of association. Simple point I am taking. It is basic document of the company.
And article of association, it is supplementary to memorandum of association. This point is not given in your textbook, but easy points I am trying to take. Supplementary means article of association only and only includes internal rules and regulation, and all those rules, internal rules and regulations, are also mentioned in memorandum of association. So we can say it is a supplementary to supporting document of MOA. And MOA is the basic, most important document because it includes both internal as well as external rules and regulation. Second point from textbook, it is compulsory for every company to prepare this document. It is compulsory to prepare this document, and here you can write it is not compulsory. Not compulsory means it is optional. Third point, the meaning of MOA, it includes internal as well as external rules and regulations of the company. Whereas article of association includes only internal rules and regulation. Fourth, any other point, important point? Yes, fourth easy point. Memorandum of association means MOA has relation with outside person and पब्लिक एट लार्ज. इस डॉक्यूमेंट का जो भी कंपनी से जुड़े हैं लोग, बाहर के लोग, शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, उनका रिलेशन इस डॉक्यूमेंट से होता है. मेमोरेंडम हैज रिलेशन विद अदर आउटसाइड पर्सन्स एंड पब्लिक एट लार्ज. Whereas here article of association AOA has a relation with company and its members. Members का मतलब है यहाँ पे shareholders, because shareholders are in OC we have already studied that members means shareholder and shareholders are true owner of the company. तो company और जो उनके owner है मतलब shareholder, बस उनके बीच के relation को define करता है. Fifth easy point we can take, memorandum of association has a broader concept. Why broader concept? Because it includes almost all the rules and regulation, internal as well as external. That's why it has a broader concept as compared to article of association. An article of association is a part of MOA, so it has narrow concept. And last point, sixth from textbook, ninth point, third party can take the advantage of
provision of memorandum of association, because memorandum of association includes all the rules and regulation, internal as well as external. That's why by studying memorandum of association, outsiders are able to know about the financial position of the company, about the nature of the company, about the financial status of the company, so that then after that they are deciding about the amount to be invested or not in that company. After that they are deciding whether to invest in the company or not. Means third party outsiders can take the advantage of the provisions, means rules of MOA. But in case of article of association, opposite of that, third party cannot take the advantage of article of association, because in article of association only internal rules of companies are mentioned. That's why they are not able to know about the financial position, actual position of the company, nature of the company. So on that basis they cannot invest money into the business. So it is basic document of the company, and AOA is supplementary to MOA. Second point, it is compulsory to prepare the document. AOA is not compulsory, it is optional. Third point is it includes both internal as well as external rules and regulation of the company, but article of association includes only and only internal rules and regulation to administer the activities. MOA has relation with outside persons and public at large, whereas article of association has relation only with company and its members. It establishes a relation between company and their members. Members means shareholders, only shareholders. MOA has a broader concept because it includes both internal and external rules and regulation, and it has relation with outsiders also. That's why it has a broader concept. And article of association is a part of MOA, so it has narrower concept. Third party can take the advantage of provision of MOA, means by studying MOA, because MOA includes all types of rules and regulation regarding company, regarding share, regarding debenture. So by studying MOA, they can decide whether to invest into such type of companies or not. But by studying AOA, they cannot understand whether to invest or not, because it includes only and only internal rules and regulation. That's why through or from article of association, they are not able to take the advantages of article of association. Now this chapter is completed. Any doubt you can ask.